Government data shows illegal migrant crossings at the southern border remained under 60,000 for the fourth consecutive month. Earlier this week, Trump indicated in a Truth Social post he would declare a national emergency and utilize the U.S. military assets to carry out mass deportations of undocumented migrants. Donald Trump is back, but this time he's bringing the U.S. military in the immigration enforcement. Imagine mass deportations on a scale that never seen before. Trump has promised to declare national emergency, federalize the National Guard, and deport millions of undocumented immigrants. And US President-elect Donald Trump has confirmed he is prepared to declare a national state of emergency as part of a mass deportation of migrants. Writing on his Truth Social platform, he responded to reports that he was considering the use of military assets. Trump has pledged to deport what he calls foreign criminals who have entered the US illegally. He made immigration a core issue in his successful bid for the White House. Controversial, right? Definitely. But how realistic this plan now? क्या सच में ये possible है या फिर एक political stunt है? Stay till end of the video and we will break down all the controversies going on in US about the Trump, about the deportation of illegal immigrants and how US and North America can be affected by these policies. Our middle class is being crushed by Biden's crippling inflation like we have never seen before, really. Violent criminals are running wild in Democrat-run cities while law enforcement has been weaponized against Christians, conservatives, and people of faith. With your help, we're going to bring our country back from hell. Victory cannot come soon enough as we speak. The last remnants of our open border. It's a broken, disgusting, crumbling, horrible border. No country has ever had a border like this. The poorest country in the world never had what's happening. You look at these scenes of millions of people coming across our border. I think it's going to be 15 or 16 million people. That's more than New York State. People are going into schools now. They're occupying schools. They don't speak the language. They don't even know what the language is. They're sitting with your children in schools. They're occupying the hospital beds. And look, we all have a heart. We don't want that to happen. We don't want bad people to be hurt. But they shouldn't be coming up. They shouldn't be coming here. Now first we will see what Trump promised. We see so many his rallies. Trump ने confirm किया है कि उनका plan largest deportation program in American history execute करने का. Deportation is the largest deportation operation in American history. ये उनकी campaign का एक major promise था जो उन्होंने US के हर state में जाके उन्होंने promise किया था कि वो जो president बन के आएंगे तो जो illegal immigrants या फिर जो undocumented immigrants हैं उनको वो बाहर निकालेंगे. That I hope you vote for Trump. November 5th, 2024 will be Liberation Day in America. On day one, I will launch the largest deportation program in American history. आज वो प्लान हमें देखने को मिल रहा है. उन्होंने सोशल मीडिया पर जाके उन्होंने कंफर्म किया कि वो कैसे एक मिलिट्री का यूज करके जो इमिग्रेंट्स हैं, जो अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स हैं, वो कैसे अपने यूएस से, अपने देश से कैसे बाहर निकालेंगे. Truth Social, in response to Tom Fitton saying that there were reports that he would use these military forces and that he would also declare a national emergency when he came into office. Trump replied, "True," in all caps, as is in Trump fashion, on Truth Social to that post. He's been saying that he wants to act on the border on day one, and he's even appointed a new position, border czar, and has put former ICE chief Tom Homan into that position. उन्होंने कहा है कि वो नेशनल गार्ड और यूएस मिलिट्री की हेल्प लेंगे जो इलीगल या अनडॉक्यूमेंट इमिग्रेंट्स हैं उनको बाहर निकालने में. उनका पहला दिन होने वाला है 20 जनवरी 2025 और जिस दिन वो प्रेसिडेंट डिक्लेयर किए जाएंगे उसी दिन से उनका पहला प्लान होगा जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको यूएस से बाहर निकालने का. और वो पहले दिन से ही अपनी जो प्रॉमिस है उसको शुरू कर देंगे. स्टीफन मिलर और टॉम हमॉन जो उनके हेडलाइनर टीम में है, उनका प्लान है कि स्ट्रिक्ट इमिग्रेशन लॉज को इन्फोर्स करना और मास डिपोर्टेशन को लीड करना. नाउ वी विल अंडरस्टैंड हाउ बिग स्केल ऑफ द प्लान. ट्रम्प के एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग वो 15 से 20 मिलियन लोगों को डिपोर्ट करना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल वेरीफाइड डाटा नहीं है अभी. रियलिटी ये है कि 2022 में एक रिसर्च के अकॉर्डिंग यूएस में लगभग 11 मिलियन इलीगल या फिर अनडॉक्यूमेंट इमिग्रेंट्स हैं. अगर ट्रम्प हर साल 1 मिलियन लोगों को भी डिपोर्ट करते हैं तो उसकी कॉस्ट 960 बिलियन तक जा सकती है 10 साल में. ट्रम्प का स्टेटमेंट है कि यहाँ पे एक कॉस्ट की बात नहीं है, यहाँ बात है जो इलीगल या फिर अनडॉक्यूमेंटेड जो इमिग्रेंट्स हैं यहाँ पे क्राइम्स करते हैं, यहाँ रूल्स को तोड़ते हैं, यहाँ मर्डर करते हैं. I will rescue every city and town that has been invaded and conquered, and we will put these vicious and bloodthirsty criminals in jail or kick them the hell out of our country and fast. To expedite removal of the Tren de Aragua and other savage gangs, I will invoke the Alien Enemies Act of, listen to this,
1798. That's an old one. तो यहाँ पे उनको रहने की कोई जरूरत नहीं है। नाउ वी विल सी व्हाट यूएस विल फेस लीगल एंड लॉजिस्टिकल चैलेंजेस। मिलिट्री को एक इमिग्रेशन इन्फोर्समेंट में यूज करना एक कंट्रोवर्शियल बात है और बहुत ज्यादा एक लीगली क्वेश्चनेबल मूव है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि डिटेंशन कैंप्स और फैसिलिटीज बनानी होंगी, लेकिन ये इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे रेडी किया जाएगा ये अभी अनक्लियर है। It hasn't been done in decades, could lead to some legal problems there. And also for the national emergency, it's unclear which specific forces Trump could use from the military. The Posse Comitatus Act of 1878 limits the federal government from using the military to enforce domestic policy. So it's unclear if the Army could be used, if the Navy could be used, but the act does not prohibit the National Guard or the Coast Guard from being used. So Trump could possibly try to use those forces as well. सिविल लिबर्टीज एडवोकेट्स वार्न करते हैं कि जब ये मास रेड्स होंगी तो जो एक लॉफुल इमिग्रेंट्स हैं या फिर जो यूएस के सिटीजन्स हैं उनको भी टारगेट किया जा सकता है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द क्रिटिसिज्म एंड फियर इन द कम्युनिटीज। ट्रम्प के जो ओपोनेंट्स हैं, जो बाइडेन और जो डेमोक्रेटिक पार्टी के जो लीडर हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनका कहना है कि ये एकदम जो प्लान है वो एकदम फेल होगा। इससे जो यूएस की इकोनॉमी और जो यूएस में लोग रह रहे हैं उनको बहुत सारी चीज फेस करनी होंगी। ये प्लान इकोनॉमिकली और सोशली बहुत ज्यादा खराब होने वाले हैं। इमिग्रेंट्स जो यूएस में 10-20 साल से यहाँ रह रहे हैं उनका कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी में बहुत ज्यादा है और वो वर्क फोर्स के लिए भी बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट कुड हैपन नेक्स्ट। ट्रम्प के जो रियल सपोर्टर्स हैं जैसे स्टीफन मिलर हो गया या फिर क्रिस्टी नोएम, वो ट्रम्प का प्लान एग्रेसिवली इंप्लीमेंट करना चाहेंगे, लेकिन इसके साथ साथ जो लॉ सूट्स हैं, जो उनकी जो पब्लिक है यूएस की, वो उनको बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी होंगी जब ये एक प्लान इंप्लीमेंट होगा। जो डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं, जो यहाँ पे जो कमला हैरिस की गवर्नमेंट बनी है, वहाँ पे उन्होंने कोई सपोर्ट नहीं दिया। उन्होंने पहले ही बोल दिया उनको इसमें हम आपकी कोई भी हेल्प नहीं करेंगे। यहाँ तक कि पब्लिक ओपिनियन भी हमको अलग देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो कुछ लोग हैं वो इस जो इम्प्लीमेंट होने वाला है लॉ उसको सपोर्ट कर रहे हैं और कहीं उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जब लोगों को इकोनॉमी और जो फैमिलीज जो इम्पैक्ट होंगी उसके बारे में बताया गया तो बहुत सारे लोग जो ये मास डिपोर्टेशन होने वाला है उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। लेट्स गो फॉर द कंक्लूजन। ट्रम्प के इस प्लान के दो साइड हैं। ट्रम्प के सपोर्टर्स बोलते हैं कि जो यूएस में इतना ज्यादा क्राइम हो रहा है, इतने ज्यादा लोग वहाँ अनडॉक्यूमेंटेड आ रहे हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये स्टेप्स काफी जरूरी हैं। यहीं पर जो क्रिटिक्स हैं वो बोलते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो बहुत सारी जो फैमिलीज हैं उनको सेपरेट किया जाएगा, उनसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी होगी। यहाँ तक कि जो यूएस की इकोनॉमी है उसमें भी आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। आपका क्या ओपिनियन है? क्या ये ट्रम्प का मूव एक जस्टिफाई होगा या फिर इससे यूएस में और केओस क्रिएट होगा लोगों के बीच में? अपने थॉट्स को कमेंट में जरूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ जो यूएस या कनाडा में रह रहे हैं, उनको काफी ज्यादा चीज फेस करने को मिलेंगी। उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं ऐसे नए टॉपिक में।